Good morning, students. So we will continue where we had left in our last class. If you remember, we were supposed to design a pre-stressed concrete deck slab bridge. This is what we were supposed to design, and it was to be designed for IRC Class A train of vehicles. Right? This was the question. The Killian span of bridge was given, and the width of support or the width of bearing at each end was also given. So the effective span was determined. How much was the effective span of that bridge? It is a simply supported bridge. What was the span of that bridge? How much was the span? Good morning. What was the span of the bridge? 10.4 meters. Okay, fine. 10.4 meters. Okay, 10 meter was the clear span and 400 was the bearing at each end. So when we consider center to center distance, for the effective span it was 10.4 meter. It is a simple deck slab bridge. This is how it will appear longitudinally. You are supposed to design it for IRC Class A train of vehicles. In case of IRC Class A, this is how the vehicle is. Correct? ऐसे है vehicle. This IRC Class A train of vehicle. These are the wheels. One more wheel is there on the other side of this, exactly behind of it. In between, the two wheels are connected by the axle. The load that is getting transferred by these axles are 27 kilonewton. It is again 27 kilonewton. Next it is 114 kilonewton. 114 kilonewton. Then it is 68 kilonewton, 68 kilonewton, 68 kilonewton, and 68 kilonewton. Is that right? It is given in IRC 6. If you see the nose to tail distance of one vehicle, the total distance was measured as 20.3 meters. And if you see the axle to axle distance, this is 1.1. How much this was? Was it 3.2 meters? 3.2. 1.2 meters. Right?
then it is शायद ये 4.3 meters, then it is 3 meter, 3 meter and 3 meter. Is it right? ऐसे था एक और तीन चार और एक पाँच, it is 5.5 plus this 4.3 plus 9. So that was total 18.8 meters. Is that right? ऐसे था? Please confirm it from IRC 6. The position where the loads are. This is available on page number 12, right? It is available on page number 12. 1.1, 3.2, 1.2, 4.3, 3. Okay, fine. So how much this total distance be on a 5.5 plus 4.3 plus 9. So it is 18.8 meter is the distance between axles. The first to last axle. Right? And what was given in the code, if you will see, for different class of vehicles, the distance between two successive vehicles is also mentioned. So in case of, if you remember, for IRC, class AA, track vehicle, या 70R, track vehicle. What is the distance between the two successive vehicles? एक vehicle है, उसके पीछे दूसरा vehicle है. So what must be the nose to tail distance between the two successive vehicles? This distance shall be not less than 90 meter. It is given in the code. In case of 70R or class AA, but if it is wheeled vehicle, so in that case, the minimum distance must be between the two successive vehicles must be 30 meter. That is given in IRC. ये सब हमने देखा है IRC 6 में ये सब गाइडलाइंस अवेलेबल है. Similarly, for two successive vehicles, in case of IRC class A or B, class A और B में if you will see dimension of vehicle same है, they are connected here. And it is considered that these trolleys are not detachable. ये detached नहीं होंगे, they will always be there. It is assumed that these are not detachable. Okay, fine. For class A and B, ये 27, 114 and 68 will get changed. This 27 will be replaced by 16. This 114 will be replaced by 68. And this 68 is replaced by 41 kilometers. That is the only difference in case of IRC class B train of vehicle. Total length of vehicle same है. The distance between the first to last axle same है. Distance between unit to axles whatever is for class A, it is same for class B. The only difference is जहाँ पर axle load fluid पर transfer हो रहा है, the axle load that will be getting transferred through wheels or axles in case of class B is 16 km in place of 27, 68 in place of 140, and 41 in place of 68 km. It is given in IRC 6. अगर हमको IRC क्लास A सॉल्व करने के लिए आता है तो हम IRC क्लास B भी सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ वहां पर लोड का डिफरेंस रहेगा. What was the distance between the two IRC class A or class B vehicles in succession? एक आगे है, उसके बाद पीछे दूसरा व्हीकल है. अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखिए एक व्हीकल ऐसे रहेगा, इसके बाद जो दूसरा व्हीकल रहेगा ये व्हीकल के बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहना चाहिए 18.5 मीटर. ये सब IRC 6 में दिया है.
वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। अगर मुझे ये ब्रिज डिजाइन करना है, इफ आई वांट टू डिजाइन दिस ब्रिज, then I must know what are the loads acting on the bridge. तो हमने देखा है for class A train of vehicles, this is how the vehicle is, the length of vehicle, the distance between the axle, the distance between the first and last axle, the load that is getting transferred from the axles. We know all these. देखिए the span is only 10.4 मीटर। अगर मैंने assume किया what load will be there on this bridge, the distance between the first to last axle itself is 18.8 या overall distance is 20.3। तो 20.3 व्हीकल का पूरा डायमेंशन लेंथ है, वही पूरा ब्रिज ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उसके पीछे वाला व्हीकल, उसके आगे वाला व्हीकल will be at much greater distance, 18.5 from the nose to tail। सो इसका मतलब ये ब्रिज पर सिर्फ एक ही आईआरसी क्लास के व्हीकल जाएगा अलॉन्ग, उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला जो व्हीकल है वो बहुत ज्यादा दूर है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट एनी अदर व्हीकल विल बी बिहाइंड और अहेड ऑफ इट। तो हम ये समझ गए हैं कि ये व्हीकल के पीछे ही आगे और कोई दूसरा व्हीकल ब्रिज पर नहीं रहेगा। दिस इज द ओनली व्हीकल दैट विल बी देयर ऑन द ब्रिज। ओके फाइन। अब हम देखते हैं द कैरेज वे विड्थ वाज गिवन एज 7.8 meters। It is a deck slab bridge। How do you sketch the deck slab bridge? This is how you will sketch the deck slab bridge, right? This is simple pre-stressed concrete post tension, क्योंकि अगर हम ब्रिज को डिजाइन कर रहे हैं तो हम पोस्ट टेंशन ही डिजाइन करेंगे। डेक स्लैब ब्रिज ये है वेरी इंपॉर्टेंट। सी अभी अगर ये व्हीकल है, मैं उसको अगर लाइन ऑफ व्हील यहां पर अगर स्केच करता हूं तो हाउ विल दे अपीयर? ये जो 27 वाला एक्सल है दैट इज दिस, राइट? एक व्हील इसके दूसरे साइड में दूसरा व्हील है, so this is the axle। The total load that will get transfer from this axle is 27। तो ये व्हील ट्रांसफर करेगा हाफ ऑफ 27, ये व्हील ट्रांसफर करेगा हाफ ऑफ 27, 27/2, 27/2। उसके बाद ये दूसरा व्हील का लाइन है, फिर ये 114 वाला है, उसके बाद और एक 114 है, उसके बाद 68 की 4 एक, ये 2, ये 3 और एक 4। अब इसमें तो ये इसलिए मैंने नजदीक स्केच कर दिया है। दीज आर द एक्सेल्स। हाउ मच द टोटल लोड गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम दिस एक्सेल? 27 किलोमीटर, because it is IIT class A train of vehicles। ये भी कितना ट्रांसफर करेगा? हाफ ऑफ 27। ये भी कितना ट्रांसफर करेगा? हाफ ऑफ 27। इट इज लाइक दैट। फिर उसके बाद का जो दूसरा एक्सल है वो भी 27 का है। दिस इज आल्सो 27। नाउ दिस एक्सल कैन ट्रांसफर 114। तो ये हाफ ऑफ 114, ये हाफ ऑफ 114, लाइक दैट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। इज इट ओके? मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है क्या? विल समवन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। Whatever I am explaining here, are you able to understand this? Okay, fine. Thank you, Noma. Thank you, Noma. Thank you, Ami. So this is 27, 27. अभी कैसे रहेगा? The dimensions are given W and B. W and B is nothing but if suppose this is the wheel, in plan I am sketching, so these are the contact dimensions। कैसे है कि ये व्हील ऐसे है,
This is the wheel. Say this is the direction of motion. ये surface है. It is not like that this wheel is tangent to this surface. उसको tangent नहीं है. Because of heavy load and this material is elastic material जो उसका टायर बना है. So that will be subjected to deformation. So rather than point in contact with the surface, certain dimensions right. This is the dimension in the direction of motion which is in contact with the surface. So if you see here on page number 13, for table 2, ground contact dimension for class A loading. Exert load is 114. That is given 11.4 tons. So in kilonewton it is 114. So B and W are given. B is the dimension in the direction of motion and W is perpendicular to that. If I assume this as the direction of motion, then in the direction of motion, whatever this contact is B and whatever this contact perpendicular to that is W. Right? Wheel इतना contact में है. So how much is value of W for 114? 114, the value of B is 250 and value of W is 500. Means अगर मैं यहाँ देखता हूँ कॉन्टेक्ट में इतना पार्ट कॉन्टेक्ट में है. In the direction of motion is 250 and perpendicular to that this direction is 500. I want all the wheels to be in same line. For 68 kilonewton, the value of B and W will change. The value of B is 200 and the value of W is 380. That is given here. It means that the width of wheel is also reducing, the contact length is also reducing. In the direction of motion, it will be 200. Perpendicular to that, it is 380. इसका मतलब wheel का width भी कम हो गया है. So here, as this is 114, 127, 27, 114, 114, this is 68, 68 like that. So here, the contact dimension if you see, in the direction of motion, it will be 200 and perpendicular to that, this will be equal to only 380. For this 27 kilonewton, now again the B and W will change. B is equal to 150 and the value of W is equal to how much? 250? 200. The value of W is equal to 200. This is the contact dimensions. Right? If suppose I keep the vehicle here, I keep the vehicle here. Say this is the vehicle. Okay? So, this is the center line of the wheel. This is the center line of the wheel. और सब wheel एक ही line में रहेंगे. All the wheels for this vehicle will be in one line. The minimum clearance here from the outer of this wheel to the face of curve must be equal to 0.15 meter. That is given in the code. If you refer here, please refer this, page number 30, figure 3, minimum clearance. F, W, G, ये सब यहाँ पर define किया है. W is the width of wheel which is in contact with the ground, perpendicular to the direction of motion. F, minimum clearance. So what is given here? Minimum clearance for class A train vehicle. Clear carriage bay width. F. 150 mm for all carriage bay width. Carriage bay width कितना की रखी है? The minimum clearance required here is 0.15. So this is the line of curve. अभी मुझे ये सेंटर लाइन ऑफ व्हील का और इसका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? If the minimum clearance from the outer is 0.15, तो मैंने क्या करना पड़ेगा? Whichever wheel which is having the maximum of the width in contact is this 500. तो ये 500 का जो हाफ रहेगा on one side, it will be 500 divided by 2 plus this 150. So how much it will be? 150 plus 500 divided by 2. Because all the wheels must be in same line, the minimum clearance I will consider with reference to the wheel which is having maximum of the width in contact with the ground. तो मुझे दूसरे व्हील के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही क्लियरेंस मिलेगा. Because it is the minimum clearance. अगर मैंने इसके रेफरेंस में कंसीडर किया
So I will get the clearance is equal to from the center line 150 plus 400 by 2, that will be equal to 350 only. If I consider 350 from the center line, यहाँ पर 250 तो ये चला जाएगा, so I will get clearance only of 100 mm. That is not desirable. The minimum clearance from the face of the curve to the outer of the beam must be 150 mm. That's why I have to consider the center line of all these beams corresponding to the beam which is having maximum of the width in contact. So here it will be 150 plus half of 500, it will be 0.4. So it means that the center of this beam from here must be equal to 0.4 meters. Is that right? Then what is the center to center distance between the two lines of beams is given. This is given as 1.8 meter. So it means that this distance is now 1.8 meter. I am just verifying how many vehicles we can pass from here. हम कितने vehicle pass कर सकते हैं? What is given? If you remember, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था how to decide whether it is one lane or two lane bridge. अगर हम देखते हैं for two lane, what is the minimum dimension required? If you see, अगर ये एक vehicle है, so here we are having another vehicle. So this is the footpath. सेंटर लाइन का कितना रहना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस 0.4 मीटर. ये डिस्टेंस कितना है सेंटर टू सेंटर इज 1.8 मीटर. द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द आउटर ऑफ टू व्हील्स ऑफ पासिंग और क्रॉसिंग द व्हीकल, ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग, या तो व्हीकल सेम डायरेक्शन में रह सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में रह सकते हैं. इफ द व्हीकल्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन दे आर ओवरटेकिंग ईच अदर. One of the vehicle is overtaking the other vehicle. If they are in the opposite direction, then the one vehicle is crossing the other vehicle. So in that case, the minimum clearance from the outer of this wheel to the outer of the another wheel must be 0.4 meter. It is given in IRC 6. See here, G. G is the between the distance between the outer of the two wheels, passing or crossing of the vehicle. G. It is in table 3, varying from 0.4 to 1.2. If I assume minimum 0.4, अगर ये डिस्टेंस मैंने 0.4 कंसीडर किया, तो ये व्हील का विड्थ कितना है 500 का हाफ, इसका भी 500 का हाफ. सो हाउ मच इज द डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0.4 प्लस 0.5 by 2 plus 0.5 by 2. So that is 0.5 plus 4, that will be equal to 0.9 meter. Again this will be equal to 1.8 meter. Again this will be equal to 0.4 meter. So just add all and you will know what is the minimum carriage width required if I want to provide a two-lane bridge. So it is 0.4 plus 1.8 plus 0.9 plus 1.8 plus 0.4. So the total will be 3.6 plus 0.9 or 0.8. तो कितना हो जाएगा 8 और 6 15 और 8 में इसका 3 कैरी 2, so it is 5.3. So that is what is mentioned in the code. For a two-lane bridge or road, the minimum clear carriageway width must be 5.3 meters, and that is explained here how that comes to right 5.3 meters. Is it okay? Are you referring table 3, page number 13? Minimum distance from the outer of the wheel is 0.4. So the minimum carriageway width must be equal to 5.3 meters. Is that okay? फिर बाद में क्या दिया है? The distance between the two vehicles can be increased. और maximum हमने कहाँ तक जाना चाहिए distance between the two vehicles? 1.2 meters. Because that G can vary from 0.4 to 1.2. If I consider this distance as 1.2 meter, तो अभी क्या हो जाएगा ये 0.4 की जगह पर आ जाएगा 1.2. So it is 1.2 plus 0.5, that will be equal to 1.7. So now the calculation will be 0.4 plus 1.8
because the value of G is changing to 1.2, that is mentioned in the clause. 0.4 से 1.2 तक जा सकते हैं. Plus 1.2 will be out of order, so center to center will be plus 0.5 by 2 plus 0.5 by 2. So that is 1.7. Here it is again 1.8. There it is 0.4. तो ये कितना हो जाएगा? 54 और 7 6.1 मीटर. So that is what is mentioned here. If I want a two-lane bridge, then what will be the minimum clear way width? That must be ranging from 5.3 to 6.1 meter. कितना रहना चाहिए? 5.3 to 6.1 meter minimum. 5.3 minimum चाहिए. If you want the distance between the two outer of the two wheels which are passing or crossing vehicles, so you have to keep on increasing the carriage day width. Such that the minimum here must be 1.2. अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो ये distance हम बढ़ा सकते हैं. So that goes to 6.1 meter the carriage day width. अगर मुझे टू लेन प्रोवाइड करना है then the minimum carriage day width must be ranging from 5.3 to 6.1 meter. अगर हम 5.3 से कम रखते हैं तो फिर हम 1 में ही कंसीडर करना चाहिए. That will be one lane bridge only. up to 6.1. अब 6.1 से भी ज्यादा रहेगा तो टू लेन के थर्ड अगर if I want see what is mentioned here. If the carriage width, if the clear carriage width is above 6.1, so then the value of G must be always equal to 1.2. This is given in table 3. If I want one more vehicle here, so with any increase in the carriage width, we have to consider the minimum distance clear. The minimum clear चलो मैंने अलग-अलग लेवल पर बता दिया है. यहाँ पर होना चाहिए. Minimum clear distance must be 1.2 meter. So center to center distance must be 1.7. So center to center of this wheel is 1.8 and this minimum clearance is 0.4. So how much will get added to this? What it will be now? For 3 lane, minimum 3 lane, कितना रहेगा? 0.4 plus 1.8 plus 1.7 plus 1.8 plus 1.7 plus 1.8 plus 0.4. So 18, 18, 18. Across the chopper 5.4. 70, 70. So the chopper 3.4. This is 0.8. 816, the 6 carried 1 part of it, no. So it is 9.6 meter. If I want a 3-lane bridge, then the minimum carriage width must be equal to 9.6 meters. Minimum चाहिए. इससे ज़्यादा बढ़ सकते हैं लेकिन minimum 9.6 मीटर चाहिए. What is the difference? We will see. 9.6 minus 6.1. ये था हमारा 2 लेन के लिए, ये है 3 लेन के लिए, so the difference is 3.5 meter. It means that for every lane to increase, the carriage way width is to be increased by 3.5 meters. क्योंकि ये 1.7 और 1.8 इतना बढ़ रहा है, the rest is all same. This 1.7 and 1.8, this is getting increased because of one additional vehicle. So that total amounts to be 3.5 meters. So it means that for every lane increase, the carriage way width is to be increased by 3.5 meters minimum. Okay, fine. और अगर आप याद रखेंगे, अगर आपको याद रहेगा अगर 3 लेन के लिए मतलब 9.6 चाहिए. अगर आप ये याद करोगे IRC 5 में कॉल दिया था, अगर आपको सिंगल लेन प्रोवाइड करना है तो आपको मिनिमम प्रोवाइड करना चाहिए 4.25 मीटर. अगर आपको 2 लेन प्रोवाइड करना है तो इन दैट केस दैट मस्ट इक्वल टू मिनिमम 7.5 मीटर. और दिया था फॉर एवरी लेन इंक्रीज वी हैव टू कंसीडर 3.5 मीटर एडिशनल. क्योंकि अगर मैं 7.5 रखूंगा तो आई विल बी एबल टू पास IRC क्लास A या 7 या
ए ट्रैक व्हीकल, उसके लिए 7.5 मिनिमम चाहिए. What is the carriage weight given in our case? The problem which we are supposed to design, or the bridge that we are supposed to design, is of carriage weight with 7.8 meter. So it is more than 7.5, or you can say it is more than 6.1, but it is less than 9.6. 6.1 से ज्यादा रहना चाहिए टू लेन के लिए. ये बोलता है 7.5 तो चाहिए ही चाहिए. से आई एम द हायर ऑफ दैट, से 7.5. 7.5 मिनिमम चाहिए कैरेज वेट. मैंने यहाँ पर 7.8 मीटर रखा है, और 3 लेन के मिनिमम 9.6 चाहिए. ये 9.6 से कम है. So what shall we call this as? It must be greater than or equal to, you say either 6.1, or you can say this must be greater than or equal to 7.5. To be called as a two-lane bridge must be less than 9.6 meter. अगर ये 9.6 के बराबर हो जाता है तो 3 लेन हो जाएगा. And for every 2 lane we consider one track vehicle of IRC class A or 70R, और जो थर्ड लेन रहेगा उसके अंदर क्लास A ट्रेन ऑफ व्हीकल कंसीडर करेंगे. That is what the combination is. For every 2 lane of IRC class A, we consider one lane or one vehicle of 70R or IRC class AA vehicle. That was discussed in the class. Different clauses we had discussed earlier in our lecture. For every 2 lanes of 7 class AA, हम कंसीडर करते हैं 70R या क्लास AA ट्रैक व्हीकल का एक ही व्हीकल रहेगा. When is it mentioned? It is mentioned here. If you refer page number 16. See, number of lanes for design purposes. Less than, it is on page number 16. It is table 6 I am reading. Less than 5.3 meter, it is one lane. One lane of class A. 5.3 to 9.6. क्योंकि मिनिमम 5.3 चाहिए, मैक्सिमम 9.6 तक. तो क्या दिखता है यहाँ पर 5.3 एंड अबव, बट लेस देन 9.6. क्योंकि 9.6 हो गया तो 3 लेन हो गया, तो लेस देन 9.6. दैट इज टू बी ट्रीटेड एज 2 लेन. नंबर ऑफ लेन्स, 1 लेन ऑफ 70R. जहां पर 70R लिखेगा वहां पर हम क्लास ए भी कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा है, देखिए पेज नंबर 16 का नोट 2. See note 2 below figure A1 of annexure A regarding use of 70R loading in place of class A loading and vice versa. जहाँ पर 70R का लोडिंग दिया है तो वो जो सब क्लॉजेस है, all those clauses are equally applicable for class A loading also. या जहाँ पर हमने A लोडिंग कंसीडर किया है, all those clauses are equally applicable for 70R also. तो जहाँ 70R लिखा है हम क्लास A भी कंसीडर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर भी एक नोट लिखा है, नोट 1. द मिनिमम विड्थ ऑफ द टू लेन कैरेज वे शैल बी 7.5 मीटर एज पर क्लॉज 104.3 ऑफ IRC 5. तो IRC 5 यहाँ पर हालांकि 5.3 से रहता है कि उसके बाद ज्यादा रहता है, तो वी परमिट फॉर टू लेन, लेकिन जो ज्यादा सेफ है हमें वो प्रेफर करना चाहिए. सो द मिनिमम विड्थ ऑफ द टू लेन कैरेज वे शैल बी 7.5 मीटर एज पर क्लॉज 104.3 of IRC 5. It is mentioned here. When it is 9.6 and above, but less than 13.1. क्योंकि अगर और एक बढ़ा देंगे 9.6 में 3.5 ऐड कर दें, 9.6 क्योंकि और एक बढ़ाएंगे तो 3.5 ऐड हो जाएगा. 12 और 13.1. 13.1 हो गया तो 4 लेन हो गया. It is 9.6 and above, but less than 13.1. Then it is 3 lane. If it is 13.1 and above, but less than 16.4, then it is 4 lane bridge. 3 लेन में क्या दिया है, 1 लेन ऑफ 70R और एवरी 2 लेन ऑफ 1 लेन ऑफ क्लास A. जहां पर हम 1 लेन ऑफ क्लास A कंसीडर किया है, जहां पर हमने 2 लेन ऑफ क्लास A कंसीडर किया है, 2 लेन के इक्विवेलेंट रहेगा 170R. अभी 3 लेन ब्रिज है, इसका मतलब एक 70R और एक क्लास A हम कंसीडर कर सकते हैं. ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं. इफ इट इज ए 3 लेन ब्रिज, जैसे यहां पर बताया है 3 lane bridge. What is mentioned here? 3 क्लास A के दिया है. 3 क्लास A के अगर नहीं रहते हैं तो एक क्लास A कंसीडर कीजिए और एक 70R कंसीडर कीजिए. Because for every 2 lane of class A,
we can consider 170 R vehicle. तो दो क्लास ए के लिए 70 R आ गया, एक बच गया, so that is class A vehicle. That is what is given here on page number 17. Same thing is continued on page number 18 also. तो जहां पर भी टू लेन ऑफ क्लास ए है, वहां पर हम एक लेन ऑफ 70 R भी कंसीडर कर सकते हैं. तो इसके लिए हमने पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व किया 70 R क्लास ए के लिए. नाउ वी आर सॉल्विंग फॉर क्लास ए. So the carriage limit is 7.8. It is in between within these limits. It means that it must be a two-lane bridge. Is that clear? ये हमने कैसे कंसीडर किया? ये टू लेन ही क्यों है? इसके पीछे कोई व्हीकल क्यों नहीं है? इसके आगे कोई व्हीकल क्यों नहीं है ब्रिज पर? Everything we have discussed. What are different roads which will be there? What are the axle roads? What are the distances between the axles? All these things we have discussed. Okay? अब क्या होना चाहिए? नासी यहां पर रहेगा दूसरा व्हीकल, ऐसे कोर्ट ने क्या किया है? अगर 5.3 का अगर कैरेज में बिट रहता है, then the outer to outer distance between the two passing or crossing vehicles or overtaking vehicles will be 0.4 meter. आउटर टू आउटर. अगर ये 6.1 रहता है कैरेज में, then it must be 1.2 meter. If it is more than 6.1, then also the minimum distance that we have to consider outer to outer of the wheel is 1.2. If this outer to, because it is 7.8, it is more than 6.1, then the outer to outer distance must be equal to 1.2. If it is 1.2, then this center to center distance must be equal to 1.7. क्योंकि ये हमने 500 वाला बिट कंसीडर किया है. तो अभी व्हीकल ऐसा रहेगा, एक ये व्हीकल रहेगा, इसके बाद और एक व्हीकल जाएगा पैरेलल. So I am assuming the two vehicles going parallel. This is how it will appear on the bridge. Is it right? This is how we can locate the position. और ये कितना distance है center of the first line of B? This is 0.2. Then it is 1.8. Then what is the center to center distance is 1.7. Then what will be the center to center distance between these two line of wheels? This is of one vehicle. This is of another vehicle. So this is again 1.8. So this is 1.7. Then this distance is 1.8. How much is the remaining distance from the center of this wheel to the face, the outer face of the curve? कितना रहेगा? The total carriage limit was 7.8. तो 7.8 में माइनस कीजिए. 0.4 plus 1.8 plus 1.7 plus 1.8. So we will get this remaining distance. 18, 18 36, 18 54 और 357, that is 5.7. So that is 1 and this is 2. So this remaining distance is 2.1 meter. Is that right? The footpath given was of 1.5 meter. This footpath given is 1.5 meter. क्योंकि आगे की फाइल में मैंने आपको पहले बताया है, there are certain guidelines which are about the lanes and all. वहाँ पर क्या है, सिंगल लेन के लिए कम से कम इतना प्रोवाइड करें, डबल के लिए कम से कम 7.5 रखें, और एवरी इंक्रीजिंग लेन हमें 3.5 इंक्रीज करना चाहिए. और वहाँ पर ये भी दिया है, if we are providing footpath, then the width of footpath must be minimum equal to 1.5 meter. Is that okay? और क्या किया था, अगर ये एक डायरेक्शन है, बीच में मीडियन प्रोवाइड किया है, फिर दूसरा और एक इधर स्पैन है, दिस इज मीडियन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, राइट? तो on each side if the median is provided, on each side it must be minimum 2 lanes. ये सब IRC finding दिया है, where the median is provided on each side of that when the motion of the vehicle is in the opposite directions. So in that case, minimum 2 lane road must be there on either side of the median. ये कम से कम 2 लेन का रहना चाहिए, ये भी 2 लेन का रहना चाहिए. Plus median must be minimum of 1.2 meters. That is given in that IRC 5.
लेकिन हम सब ये डिजाइन नहीं कर रहे हैं. What we are doing is this only, a simple two-lane bridge. So now we have identified what are different loads which will be acting on the bridge. ब्रिज पर कितना लोड एक्ट होगा, ब्रिज पर ये लोड एक्ट होगा. इसका अरेंजमेंट ऐसे दिखेगा. इफ सपोज दिस इज the line of that curve, then this distance from the center line of this wheel to the face of the curve, this must be equal to 1.2 meter. Is that all right? ये समझ में आया कि this is the position of the vehicle in plan. This is the position in elevation. These are the axle loads. Is it okay? So we have laid the vehicle across. अच्छा, what to do? अभी हमने along के लिए क्या करना चाहिए? Vehicle ये कितना है? 10.4 मीटर. अगर मैं एक्सल टू एक्सल कंसीडर करता हूँ तो दिस इज 18.8 मीटर. तो इसमें से कौन से व्हील मैंने कंसीडर करना चाहिए? Which of the wheels must be acting on the bridge? उसके लिए क्या किया था हमने? We had considered the wheels passing the center line one by one. Do you remember that guideline? हमने क्या किया था? हमने कंसीडर किया था. Say from the center line, say this is the center line, say this is the bridge. The total span is 10.4, so it is one side is 5.2 and this is 5.2. और हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया था. Load which is crossing the center line. फिर load on right hand side. फिर हमने किया था load on left hand side. फिर हमने किया था उसका डिफरेंस. पहला पास किया था 27 किलो न्यूटन. अगर ये 27 किलो न्यूटन जस्ट क्रॉसिंग द सेंटर लाइन. फिर देखा था कि पीछे और कितने लोड आते हैं. ये 27 आएगा. फिर ये 114 वाला भी आएगा. लेकिन उसके पीछे वाला लोड शायद नहीं आएगा. दिस इज 1.1, दिस इज 3.2. कितना हो गया? ये 4.3. अगर ये 4.3 है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बच गया 0.9 मीटर. द नेक्स्ट लोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2. सो दिस लोड यहाँ पर रहेगा. दिस लोड विल नॉट बी देयर ऑन द ब्रिज. तो हमने कंसीडर किया था टोटल लोड एक्टिंग ऑन द say this 27 kN is crossing, then the total load on the left hand side, the total load on the right hand side, take the difference, this minus this. फिर हमने यहाँ पर एक टेबल बना दी टोटल लोड कितना ब्रिज पर एक्ट हो रहा है. फिर बोला था दिस इज द फर्स्ट 27 क्रॉसिंग, then the second 27 kN लोड इज क्रॉसिंग. फिर अब सेकंड क्रॉस किया तो भी ऐसे हो जाएगा. ये सेंटर लाइन यहाँ 27 रहेगा, यहाँ 27 रहेगा. अब उसके पीछे के हम लोड कंसीडर करेंगे. So the total load on the left hand side will be 54 किलोमीटर. अभी यहाँ पर कितना लोड आएगा? इसके बाद यहाँ पर एक लोड आएगा. At what distance? 3.2. 3.2 मीन्स और कितना बच गया? ये 5.2 मीटर. ये 1.2 वाला भी आ जाएगा. That is this. So the total load of the right hand side will be equal to 228. Then take the difference. You will get some value. फिर उसके बाद फर्स्ट 114 पास किया, then we will get back. फिर उसके बाद हमने ये डिफरेंस लेंगे. पहले पॉजिटिव डिफरेंस था, पहले पॉजिटिव डिफरेंस था. हो सकता है कि जहां पर निगेटिव डिफरेंस आ जाए. तो जब निगेटिव डिफरेंस आता है, बट इन दैट केस मैक्सिमम ऑफ द लोड मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ब्रिज. टू कंडीशंस है. पहले जो डिफरेंस था पॉजिटिव था तो उस अपना साइन चेंज करना चाहिए. सेकंड, मैक्सिमम ऑफ द लोड मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ब्रिज. तो हमने वो भी देखना चाहिए. So that condition was identified. Is that right? उसके बाद क्या किया था हमने? फिर how did we identify the position of the vehicle? जब हमने identify किया था which of the load is crossing, फिर that load which was crossing from the center line and the resultant of all the loads which were acting on the bridge, those two we had placed symmetrically with reference to the center line of the bridge, equidistant from the center line of the bridge. And the exact position of the vehicle was identified. So what was that exact position of the vehicle? Because that is very much required here
for the load calculation. So how will it be? ये है ब्रिज. तो पहला लोड कहाँ पर एक्ट होगा था 27 किलोमीटर. राइट. कौन कौन से लोड एक्ट होते थे मुझे याद नहीं है. कोई मुझे आंसर देगा क्या? इट वाज समथिंग 0 पॉइंट. मुझे ये डिस्टेंस दीजिए. कौन से लोड पास कितने लोड थे? दूसरा भी 27 था. फिर उसके बाद 114 था. शायद और एक 114 था. फिर इट वाज 68 किलोमीटर. और यहाँ पर स्पैन एंड मिला था. इज इट राइट? 0.743. 0.743. इज इट राइट? यही था क्या आंसर? Then this was 1.1. This is 3.2. This is 1.2. This is 4.3. Then how much the distance was here at the end? ये एंड पर कितना था? ये आंसर करेक्ट है कि अगर आप मुझे जो आंसर देंगे उसके रेफरेंस में यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा. यू मस्ट हैव कैलकुलेटर्स अवेलेबल विथ यू. कैलकुलेटर्स आपके साथ चाहिए भी. इज दैट राइट? पॉइंट 743 करेक्ट है क्या? मुझे आप आंसर दीजिए. जो आंसर रहेंगे उसके रेफरेंस में सॉल्व होगा प्रॉब्लम. वॉट एवर आंसर यू विल गिव वी विल सॉल्व इन रेफरेंस टू दैट. अच्छा, ओनली वन था? नहीं था ओनली वन. नहीं, ये इतने नोट तो थे मुझे लगता है. एंड दिस वाज 0.957. Okay, correct sir. After calculation resultant force and x we got 0.743. Okay, fine. नहीं, दोनों 27 थे मुझे लगता है. होना चाहिए. जस्ट नोट ऑल दिस. ये पोजीशन ठीक है मुझे लगता है. दिस इज ऑल राइट. इज इट ओके? पॉइंट 743 और 0.9 कितना हो जाएगा ये? 8 plus 1.7 प्लस दिस वन 3 4 5 प्लस 5.5 प्लस 4.3 कितना आ रहा है ये? 9.8 और 1.7. That is going to be 5. 11.5. 0.7 or 0.9. What is right? अच्छा, there was only one load. ऐसे बोलना है क्या आपका? ये दो नहीं थे. This was the only load acting. अब कितना हो रहा है ये? ऐसे है क्या? 3.2 plus 1.2 plus 4.3. 3 4 और 4 8. 8.7 प्लस 3.2 1.2 एंड 4.3. कितने लोड थे? मुझे डाउट है. 8 1.7. ये तो 9.4 हो रहा है. कुछ मिस्टेक कर रहे हैं.
If I pass from the center line the second 27 kilometer load, एक यहाँ है, कौन सा क्रिटिकल आया था? ये फर्स्ट लोड या सेकंड लोड क्रॉस होना चाहिए था? सेकंड 114. ओके, लेट अस सी. ये है 114. तो दिस इज 1.2. उसके बाद 3.2. कितना हो गया ये? 3 और 1 4, 4.4. 5.2 में से माइनस किया तो 0.8. तो फिर उसके बाद तो अब लोड आना नहीं चाहिए. 1.2, 3.2. ओके फाइन. दिस इज 27 किलोमीटर. उसके आगे का लोड यहाँ पर आएगा बिकॉज दिस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 0.8 only. Is that right? This is 114. I consider the second 114 kilometer is passing the center line. उसके पीछे कहाँ रहेगा लोड? ये 68 पर. This is 4.3. How much is the remaining distance here then? 0.9. पीछे लोड तो 3 मीटर पर है, तो यहाँ का एक लोड नहीं है because this distance is just 0.9 meter. Okay. 27, 114, 114, 68. How much is the total load? जरा देखिए. 228 plus 68 plus 27. 8 और 16 और 7. 23. 3 carry 2. 6 4 10 दोबारा. Okay. 323 was the maximum load that was active. यही था. Is it okay? Fine. Thank you, Norman. So this is the load that was critical. When this load was crossing, फिर हमने क्या किया था? We had determined the result of all these forces. The position x bar was determined when the resultant is acting from here, and it was found that the resultant is acting somewhere here. कितना था? What was the position of the resultant? 5.314 meter, I think. Is that right? तो हमने क्या किया था फिर? 5.2 is up to center, तो इसमें से 5.2 माइनस किया. It was 0.114. इसको हमने डिवाइड किया था 2 से, so that will be 0.57 मीटर. इसका मतलब दिस लोड जो हमने सेंटर लाइन पर कंसीडर किया था, दिस एंड दिस रिजल्टेंट आर प्लेस सिमेट्रिकली फ्रॉम द सेंटर लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 0.57. तो ये 0.57 आगे बढ़ गया. ओके राइट. तो दिस एंड दैट. तो व्हाट इज द ओवरऑल स्पैन? ये पूरा मैच हो रहा है के लिए दिस मस्ट बी टोटल इक्वल टू 10. कितना हमारा? 10.4 मीटर. जस्ट ऐड इट. 3.2, 1.2, 4.3. 3 और 1 4 और 4 8. 8.7 प्लस 1 कितना आ रहा है? ये 7. 1 4 8 9 और 10 बराबर है. ठीक है, मैच हो रहा है. दिस इज ऑल राइट. दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हीकल. इट इज परफेक्ट. इज इट ओके? सो दिस इज हाउ वी हैव लोकेटेड the position of vehicle along. स्पैन के along vehicle कैसे रहना चाहिए, स्पैन के across vehicle कैसे रहना चाहिए, that we have worked out. vehicle कहाँ रहेगा? हमको क्या मिला है? vehicle along कैसे रहेगा, vehicle across कैसे रहेगा. अब हम स्टार्ट करते हैं लोड कैलकुलेशन. डेड लोड कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डेड लोड कैलकुलेशन. नाउ इफ आई consider 1 meter wide strip in carriage way. यहां पर मैंने 1 मीटर वाइड स्ट्रिप किया बिकॉज दिस इज हाउ द ब्रिज इज. राइट. प्लान में ऐसे लिखेगा. नाउ वी आर कंसिडरिंग 1 मीटर वाइड स्ट्रिप हियर. ये 1 मीटर वाइड स्ट्रिप कंसिडर किया. या हम बोलेंगे इसे हियर आई हैव कंसीडर 1 मीटर वाइड स्ट्रिप विच इज इन द कैरेज वे. तो क्या रहना चाहिए यहाँ पर?
self weight of, because see, here is the support, here is the support. This total distance is 10.4 meter. Correct? Self weight of deck slab. How will you get? That is the intensity of weight or the unit weight of the precise concrete multiplied by the thickness. अब how much thickness you want to consider? How will you consider thickness of deck slab? बोलिए मुझे. How will you assume thickness of deck slab? Assume thickness of deck slab. कितना consider करेंगे? What shall be the thickness of deck slab? We are having a thumb rule. What is that thumb rule? For every meter span, consider the depth of deck slab as 50 mm. So how much it must be? Approximately 10.4 multiplied by 50. कितना हो जाएगा फिर भी ये? 520. क्या करेंगे फिर? या तो ऑल्सो कंसीडर कीजिए या हायर साइड में जाकर करते से 550 mm in the multiples of 50. Okay, you are right, Amir. You are right. 50 mm per meter span. You are right. Span is 10.4 meter. Say it is a third rule. We are assuming फाइनली हमको चेक करना है. 520 आ गया. हायर साइड में अप्रोक्सीमेट करेंगे 550. Then what must be the self weight of deck slab? 0.55 multiplied by the unit weight of this stress is 25 kilonewton per meter cube. So I will get in terms of kilonewton per meter square. And if I consider 1 meter wide string, then I will get in kilonewton per meter. Kilonewton for 1 meter wide string, it will be multiplied by 1 हो जाएगा, then it will be kilonewton per meter. चलिए कितना आता है बोलिए मुझे सेल्फ वेट 0.55 into 25. 25 बन 125 का 5 कैरी 12 125 135 137. So it is 13.5 kilonewton per meter square. For 1 meter wide, it will be 13.75 kilonewton per meter. This is the span 10.4 meter. This is the self weight. It is because of deck slab. कितना है? 13.75. What is the shear force? How much is the bending moment? चलिए मुझे shear force दीजिए और bending moment दीजिए. This multiplied by 10.4 divided by 2. You will get the shear force and get the bending moment here. W square by 8. It is simply supported. So I will write here the dead load bending moment due to deck slab. Dead load bending moment due to bearing coach. Dead load shear force due to deck slab. Dead load shear force due to bearing coach. This is when the strip is considered in carriage way. चलिए मुझे ये आंसर दीजिए. Give me these answers. 13.75. Okay, that is kilonewton per meter is the intensity of load. Multiplied by 10.4 divided by 2, get the shear force. चलिए मुझे ये आंसर दीजिए. So that in reference to this, I will explain you what to do next. एक बार हमारे पास ये आंसर आ गया तो हमारा एनालिसिस पार्ट हो जाता है कंप्लीट. देन वी कैन गो फॉर द डिजाइन. और डिजाइन हमको पता है इट इज अ वेरी रूटीन प्रोसीजर. एनालिसिस में सोचना पड़ता है कहाँ कहाँ लोड है, कितना लोड है, लोड कैसे एक्ट हो रहा है, उसका बिहेवियर कैसे आएगा. प्लीज गिव मी द shear force. प्लीज गिव मी द बेंडिंग मोमेंट. What about for the self weight of
bearing coat. Bearing coat कितना दिया है क्वेश्चन में 90 mm. So it is 0.09 because it is 9 centimeter. Multiplied by the unit weight of bearing coat 26 kilonewton per meter square cube. So multiplied by 3. You will get in terms of kilonewton per meter square. For 1 meter, जैसे we have considered 1 meter wide street. So for 1 meter wide street multiplied by 1. So it will be in terms of kilonewton per meter. Then here it is for the bearing coat. 71.5. Thank you. So the dead load shear force because of dead slab 71.5 kilonewton. What about bending moment? 185.9. Thank you. So 185.9 kilonewton meter. Thank you. Thank you, Roma. Now for bearing coat, what is the intensity? 0.09 multiplied by 26. How much it will be? 2.6 से थोड़ा कम रहेगा. Thank you, Amir. Thank you, Amir. I expect others also to take the active part. है ना, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि IRC कैलकुलेटर ये सब साथ लेकर बैठना चाहिए. Please sit with the IRC and calculators. 2.34 fine. So it is 2.34 kilonewton per meter square. So that was the kilonewton per meter. 2.34 kilonewton per meter. This is the shear force diagram and this is the bending moment. So get the shear force and bending moment because of bearing coat. When the strip is considered from the carriage way, ये वैल्यूज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जब मुझे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, अल्टीमेट लिमिट स्टेट जब मुझे सॉल्व करना है प्रॉब्लम फॉर द डिजाइनिंग, मुझे ये सब पता रहना चाहिए क्योंकि अलग अलग लोड्स के लिए अलग अलग गामा एफ है. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इज डिफरेंट फॉर different type of loads. That's why I am calculating all these loads separately. 12.17 I will write. It is 12.17 kilonewton and bending moment I will write as 31.64. 31.64 kilonewton meter. Okay, fine. Let's I will see what happens if I consider the 1 meter wide strip here from the footpath. What is going to happen in that case? How much is overall depth will be? क्योंकि यहाँ तक तो प्रीस्टेज रहेगा, ऊपर आरसीसी रहेगा, but as far as the load calculation is there, for प्रीस्टेज as well as for RCC, the unit weight is 25 kilonewton per meter cube. It is given in IRC6 for reinforced concrete as well as for pre-stressed concrete. In IRC6 the unit weight is given. हमको समझ में आना चाहिए कौन सा वैल्यूज कहाँ से लेते रहना है. Where is it given? If you refer IRC6, there is a table that gives idea about the unit weight of different materials. See, it is on page number 8. Dead load. IRC6 2017 203 clause dead load for different materials it is given. For concrete, cement reinforced. For concrete, cement pre-stressed. So for pre-stressed as well as for reinforced, it is 2.5 ton per meter cube. So that comes to be 25 kilonewton per meter cube. Now subjected to what kind of binder it is for the bearing coat. Subjected to the binder it is 2.2 to 2.6 ton per meter cube. So that is 22 kilonewton per meter cube to 26 kilonewton per meter cube. Any value can be assumed. I assumed it on higher side 26. हम 22 की assume कर सकते थे. या अगर आप कोई दूसरा मटेरियल यूज कर रहे हैं
जिसका यूनिट वेट ये कोड में नहीं दिया है, so you must know the exact unit weight of that, and that is to be used in the calculation. If I consider the carriage weight, if I consider 1 meter street in footpath, then what is going to happen now? Here, how much this is? The deck slab is 550 mm. The bearing put above is 90 mm. Plus the clear depth of this curve above the bearing put is 900 mm. So how much this overall depth of footpath will be? That will be 550 plus 90, because 550 is the deck slab plus this 90 mm is the bearing put, और bearing put के ऊपर 300 mm का कर्व दिखना चाहिए ऐसे बताया. So this 300 mm is the depth of curve above the bearing put. So that plus 300. तो कितना हो जाएगा भैया? 300 ऐड करेंगे तो 0000954 हो जाएगा. कैन 5 और 3 और 1 940 mm. इसका मतलब the overall depth will be equal to 0.94 meter. So the self weight will be equal to the self weight of footpath. What is it? It is including of deck slab plus footpath. How much that will be equal to? 0.94 multiplied by 25. You will get in terms of kilometer per meter square. Again, consider the 1 meter wide space, then it will be multiplied by 1, so that answer will be kilometer per meter. And this is how it will be. Okay, railing will also be there. Railing, assume it is 1 kilometer per meter in the direction of the anti-price barriers that we provide at the end. These anti-price barriers of the railings. Assume, say 1 kilometer per meter. How much this total is? 0.94 plus 25. I multiply by 25. Thank you, Roman. 0.94 multiplied by 25. सबसे बड़ा काम रहता है लोड को आइडेंटिफाई करने का. कहाँ है, कितना है, कैसे एक्ट हो रहा है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कॉन्संट्रेटेड लोड है, कितना इंटेंसिटी है, एंड कंडीशंस क्या है, रिस्पांस क्या है, फिर शेयर फोर्स कितना एक्ट होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना एक्ट होगा, हमको ये सब कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है. अगर ये हो गया तो इसको मतलब वी हैव डन विद द एनालिसिस पार्ट. उसके बाद डिजाइन रहेगा. सो इट इज 23.5. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जानकर. So this is 23.5 kilometer per meter. ये 1 मीटर वैल्यू इसमें ऐड कर लेंगे. So that total will be equal to 24.5 kilometer per meter. ये रेलिंग इसमें ऐड कर दिया है. इसका is 10.4 meters. Now get this. This is reeling 1 kilometer. Add कर दिया. So now here is the shape and here is the reeling moment. Check. So what is the, when 1 meter split is considered a footpath, right? Then the dead load bending moment, dead load shift. It is because of deck slab plus footpath plus railing. Deck slab plus footpath plus railing. How much it is? Thank you, Amin. It is 331.24. 331.24 kilometer, and shear force is 127.4. It is 127.4 kilometer. Done. यहाँ पर मेरा डेड लोड एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है.
डेड लोड मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि कहाँ एक्ट हो रहा है, कितना एक्ट हो रहा है, कितना शेयर फोर्स आएगा, कितना बेंडिंग मूवमेंट आएगा. नाउ वी विल गो फॉर द लाइन लोड कैलकुलेशंस. पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट के लिए व्हीकल कैसे रहेगा? दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हीकल अलोंग. दिस इज पोजीशन ऑफ द व्हीकल अक्रॉस. राइट. मैं ये डिस्टेंस ध्यान नहीं देता हूं. दिस इज 0.4, 1.8, 1.7. Then next is 1.8. It is 1.2. This is 1.5. This is also 1.5. So I have to cover all the distances. Now please, I am talking about the bending moment calculation. कैसे रहेगा? How it will be? ये है फुटपाथ. This is the edge of this footpath. This is the edge of the face of curve. This is the line of B. Here is second line of B. फिर ये दूसरा vehicle, दूसरा vehicle second line. फिर ये curve, ये footpath. ओके. अभी देखिए, I am sketching the position of vehicle along the high scale, across the high scale. Now I am sketching in plan. This is footpath, 1.5 meter. This is first line of wheels, 0.4. The distance between the two line of wheels, 1.8 meter. The distance between the line of second wheel, the wheel of second vehicle, which is crossing or passing. This center to center distance is 1.7 meter. This is the second vehicle. The two line of wheel must be at a distance of 1.8, and the remaining distance from the center here is 1.2 meter. For the given conditions, अब carriage change होता तो फिर ये direction change होता. This is again 1.5 meter. I am sketching the position of vehicle in plan. Plan में vehicle कैसे दिखेगा? What must be the first line of load? ये support है. This is the support here. वहाँ से कितने दूर पर रहेगा first line of load? 0.743. So here it is. Let this distance is 0.743 meters. यहाँ पर व्हील है. यहाँ एक व्हील रहेगा. यहाँ एक व्हील रहेगा. यहाँ रहेगा. यहाँ रहेगा. Is that right? This is one axle. ये दूसरा व्हील है. दूसरा व्हील है. Is it okay? ऐसे दिखेगा ये. This is how the position of the vehicle will be. ये एग्जैक्ट लोड कितना रहेगा? 27 किलोमीटर. ये दूसरा व्हील भी उसके पैरेलल नहीं है. This is again 27 किलोमीटर. The two vehicles are moving parallel. That is what I have assumed. उसके कितने दूर के बाद रहेगा? 3.2 मीटर. Say this is 3.2 meters. यहाँ पर भी एक व्हील है at 3.2 मीटर. एक व्हील यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ये दूसरी व्हीकल यहाँ रहेगी और यहाँ रहेगी. Is it right? This is the right. ये एक व्हीकल है, ये दूसरा व्हीकल है. ये कितना रहना चाहिए? एक्सल लोड 114. This is 114. Is it right? ये जो एक दिख रहा है, इसके पीछे और एक है. ये जो 27 दिख रहा है, इसके पीछे और एक दूसरा व्हीकल है. I have just sketched one vehicle कि कैसे रहेगा so as to produce the maximum effect. ये मैंने पोजीशन लोकेट किया है व्हीकल का such that it must produce the maximum bending moment in the bridge. The location of the vehicle along the span, across the span,
such that it must produce the maximum bending moment in the bridge. अभी उसके बाद और एक 114 है at distance of 1.2 मीटर. This is 1.2 मीटर. अब यहाँ पर एक ब्रिज है. ये है. Right? This is again 114. 114. Though vehicle parallel, this is the direction of motion. This is the direction of motion. ये जो पहला लाइन है वो 0.743 है from the support. तो from the support it is. क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है. उसके पीछे एक 68 वाला भी व्हील का लाइन है. This is at a distance of 4.3 मीटर. ये एक्सल लोड है 68, ये भी है 68. The two vehicles are moving parallel. उसके बाद ये ब्रिज यहाँ पर खत्म हो जाता है. अब यहाँ पर ये व्हील का लाइन भी नहीं रहेगा. अच्छा, व्हील का लाइन रहेगा लेकिन वहाँ पर कोई व्हील नहीं आएगा क्योंकि इतने ही लोड आ गए हैं. उसके पीछे तो और भी व्हीकल है. व्हीकल का काफी पार्ट है. How much is remaining distance is 0.957 meters. Is it okay कि व्हीकल हमको टॉप व्यू में ऐसे ही दिखना चाहिए ऑन द ब्रिज? इज इट ऑल राइट? ये समझ रहे क्या गुलाम खाजा? वेलकम गुलाम खाजा. ये समझ में आ रहा है कि व्हीकल कैसे रहेगा टॉप व्यू में? How this vehicle will appear in top view? Will someone please answer in the chat box? Are you able to understand? Okay, thank you, Janvi. So this is how the vehicle will be in the top view. अभी देखिए, मुझे कितना लोड ट्रांसफर कर रहा है ये एक्सल पता है 27. ये भी कितना करेगा? हाफ ऑफ 27. ये भी कितना करेगा? हाफ ऑफ 27. क्योंकि 27 इज द एक्सल लोड. This axle load is 27, तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा. Fine, no problem. लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा? Because the load is actually concentrated. That load we have to convert into its equivalent uniformly distributed load effect. How that can be? We must know the contact dimensions. अभी 27 का है. यहाँ पर एक contact dimensions कितना है? How much these contact dimensions are? So, हमने ये पहले डिस्कस किया है ये कांटेक्ट डायमेंशन. क्योंकि हमको चाहिए जब तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कितना एरिया पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. सो इट इज 27. हाउ मच इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन? हाउ मच इट इज परपेंडिकुलर टू दैट? ये डायरेक्शन में कितना है? 200. और ये डायरेक्शन में कितना है? यहाँ पर ये 150 इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये कितना कांटेक्ट है? Perpendicular. This is 140 millimeter. So this is the direction of motion. Perpendicular to that, it is 500 mm. And in the direction, it is 250. ये 140 के भी वही रहेंगे. Right? ये 68 का क्या रहेगा? Perpendicular to the direction of motion.
This is 380 and in the direction of motion this is 200. ये सब हमने देखा है, ये सब कहाँ अवेलेबल है? These all are available in IRC 6. There is a table. The sketch is there and that sketch gives us the idea. ये आपको रेफर करना पड़ेगा पेज नंबर 13 पर IRC क्लास ए। अच्छा, IRC क्लास बी में भी सेम रहता है, सब मैंने पहले बताया है। व्हीकल का डायमेंशन सेम है, ओवरऑल डायमेंशन सेम है, एक्सल टू फर्स्ट टू लास्ट एक्सल डायमेंशन सेम है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सल भी सेम है। What must be the minimum distance between the two successive vehicles? That is also same, 18.5 meters. सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 27 की जगह पर कितना हो जाता है? 60, 140 की जगह पर आ जाता है 68, और जो 68 है उसकी जगह पर आ जाता है 41। जब लोड चेंज हो रहा है तो फिर वहां पर कॉन्टैक्ट डायमेंशन भी चेंज होते हैं, राइट? क्योंकि व्हील के डायमेंशन चेंज रहेंगे। प्लीज रेफर पेज नंबर 15। IRC क्लास बी में सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ कहां डिफरेंस आ रहा है नेट एंगल पे। सी हियर फॉर 6.8 टन so that is 68 kilonewton, 41 kilonewton, 16 kilonewton, the dimensions are different, 200, 380, 150, 300, 125, 75 like that. तो contact dimension change हो जाएगी, the rest is all same. This contact dimension will change. Okay, fine. This is how the vehicle will be. अब क्या करेंगे? Let I will see here कि ये जो लोड है ये along in the direction of motion कहाँ तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है। जैसे आपको याद रहेगा पहले हमने क्या किया था, अगर ऐसे कोई व्हीकल है जो हमने ट्रैक व्हीकल कंसीडर किया था, राइट, और जब हमने उसको प्लान में रखा था हमने देखा था इसका अलॉन्ग का डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक हो रहा है, इसका अक्रॉस में यहाँ पर कहां तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसका ये डिस्पर्शन इफेक्ट कहां तक जा रहा है। फिर नेट इफेक्टिव कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज द एरिया ऑन व्हिच द इफेक्ट ऑफ दिस लोड विल बी। सो दैट पैक वाज वर्कड आउट फॉर दीज लोड्स इन केस ऑफ ट्रैक व्हीकल। इज इट राइट? अब हमको यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। पहले आसान ये था कि सिर्फ यही दो व्हील थे, द ट्रैक थे ऑन द ब्रिज। अब यहाँ पर इतने सारे व्हील्स हैं, हमको ये सब के लिए यही काम करना पड़ेगा। जो पहले हम एक बार करते थे वो भी हमको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। सो हियर दिस इज द, नाउ यू कंसीडर द डिस्पर्शन ऑफ द लोड अलोंग एंड परपेंडिकुलर। हाउ द डिस्पर्शन इफेक्ट विल बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर? See this is the deck slab, ये है वेयरिंग कोच, ये है व्हील्स इन कॉन्टैक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? 27 एक्सल लोड, 114 एक्सल लोड, 114 axle load, 68 axle load, these are the loads which will be acting. Then position is also available. How much is the distance which is in contact? That is in the direction of motion. अगर ये 27 kilonewton है, तो in the direction of motion ये contact width कितना है इसका? How much is this contact length in the direction of motion? When the axle load is 27 kilonewton, how much it is in the direction of motion? How much is the contact length in the direction of motion for a wheel which is provided for axle which is transferring 27 kilonewton axle load? What is the contact length of this wheel? कितना distance contact में रहेगा? When you will get in the direction of motion 27 kilonewton axle load. So how much is the wheel which is in contact? Why 200? In the direction of motion I want. No man, I want this contact length in the direction of motion. This is the direction of motion. So in the direction of motion, how much perpendicular to the direction of motion is 200. This is in the direction of motion. This width I want.
So that must be you are right darling. Is it okay Noman? जो आपने 200 बोला है that is this dimension, it is perpendicular to the direction of motion ये है. What dimension you have noticed perpendicular to that? I want the dimension in the direction of the motion. Okay, fine. So this is 150. अभी यहाँ से डिस्पर्शन कितना डिग्री रहता है हमने भी देखा था, अगर आपको याद रहेगा क्या किया था. दिस इज द ट्रैक व्हीकल, ये था कॉन्टैक्ट लेंथ. तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज 45 डिग्री. ये 3.6 था या 4.57 तो कितना रहता है, या 527 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. फॉर 70 आर के लिए कितना है, व्हाट इज द कॉन्टैक्ट लेंथ? ये 3.6 मीटर इज फॉर क्लास ए. And for 70R, how much it is? कितना है? 4.57. राइट? 3.6 से ये एंगल 45 डिग्री तो हमको पता रहता है ये कितने स्पेक्ट्रम पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर ये 3.6 नहीं है तो फिर 4.57 नहीं है 70R के लिए. ये है क्लास ए के लिए, क्लास ए ट्रैक मीटर. This for 70R. So what is the nature of vehicle? along हमको समझ में आया है कि वो कितना डिस्टेंस तक रहेगा. You are right, Daniel. It is 4.57. So here, if this width is 0.15 plus this angle of distribution is 45 degree. So this plus this distance कितना हो जाएगा ये? This is 90 mm. This is 550 mm. So this total amount to be 640 mm. So it is 0.64 meter. So this is 0.64 plus this is 0.64. So the overall span on with the effect of this load will be कितना आएगा? अच्छा देखिए कहीं इसके बाहर तो नहीं निकल रहा है ये. Just see 0.64 plus इसका हाफ कितना रहेगा? ये 0.15/2 सेंटर. I just want to see कि कहीं इसके बाहर तो नहीं निकल रहा है. 0.15/2 is 0.07 5.7 okay, means I just want to see कि कहीं इसके बाहर तो नहीं निकल रहा है. 0.743 और ये उससे कम रहेगा. So it will be within the span. ये लोड का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट यहाँ तक रहेगा. For how much distance it will be? 0.64 plus 0.64 plus 0.15. मैंने सिर्फ ये वेरीफाई किया है कि कहीं भी डिस्पर्शन इसके बाहर तक तो नहीं जा रहा है. तो नहीं जा रहा है. इट इज ऑलराइट, इट इज विद इन दिस. अगर बाहर तक जाएगा तो हमको यहाँ तक कंसीडर करना पड़ेगा. So how much it is now? 0.64 plus 0.15 plus 0.64. So it is 0.64 plus 0.15. 4 4 8 8 5 4 3 6 6 12 13 14 1.43. So this is 1.43 meters. Is it right? अच्छा यहाँ पर लोग कितना दूर में रहेगा? How much the remaining distance is? How much it will be? How will you get that distance where there is no effect of load? मैं यहाँ पर मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ कि along the span कितना रहेगा. along the span. फिर आप देखेंगे across the span क्या आएगा. ये कितना रहेगा? 0.743 माइनस इसका हाफ सेंटर से कितना डिस्टेंस है तो माइनस 0.715. तो 5 तेरह में 6 नहीं 8 है. 3 में से 1 गया 2 0.028 meter. So there is no load for a distance of 0.028 meter. Then they are having distributed load because of this load. अभी यहाँ पर आएगा what is this contact distance? ये व्हील का कितना contact length contact में है? This is 114 kilonewton. So for 114 kilonewton in the direction of motion, the contact length is 250. This is the direction of motion. So this contact length must be equal to 250. और फिर यहाँ से 45 का डिस्पर्शन, यहाँ से 45 का डिस्पर्शन. तो यहाँ पर रहेगा कितना डिस्टेंस आएगा?
ये कितना रहेगा 0.64 पॉइंट से कितना हो जाएगा ये बताइए मुझे। अच्छा, अगर मैं इसका डिस्पर्शन कंसीडर करता हूं तो क्या वो मर्ज हो जाएगा कि इसके साथ? देखिए whether this effect will get merged in the direction of motion, क्योंकि अगर मैं इसके सेंटर से डिस्टेंस कंसीडर किया इसके सेंटर तक तो कितना रहेगा 0.25/2 प्लस 0.64 प्लस 0.25/2। इज दैट राइट? दिस इज 0.25/2। फिर ये यहां से जो रहेगा इसका 0.64, इधर से क्या आना चाहिए 0.4। आई जस्ट वांट टू सी कि अगर दोनों जस्ट टचिंग है तो क्या होने वाला है। इफ दे आर जस्ट टचिंग तो कितना डिस्टेंस चाहिए जस्ट फॉर टचिंग के लिए? प्लस 0.25/2 तो कितना हो जाएगा 0.25/2 0.25/2 0.25 तो 0.25 प्लस 8 12 1.28 8 और 5 तेरह के 3 हाथ से जाएगा 1 2 3 4 5 and 1.53 meters. If the dispersion is just touching to each other, so in that case, the center to center distance must be equal to 1.53. But here the center to center distance between these two beings is 1.2. It is greater than 1.2. इसका मतलब ये ऐसे नहीं होगा बल्कि ये दोनों ऐसे मर्ज होने वाला है। The effect is getting merged here. ये समझा है कि मैंने क्या बताया है? How the effect is going to get merged? देखिए ये एक व्हील है, ये दूसरा व्हील है। दिस इज वेरी गुड, दिस इज द डेक्स लाइन। ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया है 1.2। यहाँ पर कितना विड्थ कोऑर्डिनेट में है 250 mm। यहाँ कितना है कॉन्टैक्ट में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 250 mm। यहाँ से ऐसे डिस्पर्शन आएगा। अगर मैं ऐसे अज्यूम करता हूँ कि डिस्पर्शन ऐसे रहेगा, राइट? अभी देखिए ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना रहेगा 0.25 प्लस ये वेरी इंपॉर्टेंट 90 था प्लस दिस 550, so this overall is equal to 0.64 meter, this plus 0.6। यहाँ से भी इतना ही रहेगा ये, this will get multiplied by 2। मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना डिस्टेंस आएगा या दोनों के बीच में कुछ गैप रहेगा क्या? So I have found that this total distance is equal to 1.53। अरे सेम बिटवीन तो दोनों का डिस्टेंस ही 1.2 है तो 1.53 का डिस्पर्शन ऐसे हो नहीं सकता है, दोनों में कोई गैप नहीं रहेगा। इसका मतलब इसका डिस्पर्शन एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप करने वाला है। So the dispersion is going to overlap each other. Is it right? Because अगर मैं उसको अलग-अलग कंसीडर करता हूँ, so the total distance center to center must be available as 1.53. Whereas the distance available is actually 1.2 only. It means that the dispersion effect is going to lag. तो ये दोनों लोड मिलकर एक ही लोड के वैसा बिहेवियर देंगे। तो कितना एक्सपैंड ये देंगे? How much expanding will be? देखिए ये सेंटर है यहाँ पर इधर, तो how much this is 0.25 divided by 2 प्लस एक साइड में कितना है 0.6। ये डिस्टेंस कितना है बीच में प्लस 1.2 प्लस दूसरे साइड में भी यही है इतना ही। सो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2। ये मैंने कैलकुलेट किया है 1.53 प्लस दिस 1.2, इसका मतलब दिस विल बी 2.73 meters। So this effect of load will be for a distance of 2.73 meters। For how much distance there is no load acting here in between? कैसे कैलकुलेट करोगे? The total distance was 3.2. The total distance was 3.2, उसमें से माइनस कीजिए। The total distance is 3.2 माइनस कितना रहेगा? ये यहाँ से यहाँ तक का हाथ कितना है वो 0.15/2 प्लस 0.6 और इसका कितना माइनस रहेगा? माइनस 0.25/2 प्लस 0.6। You tell me the distance where there is no load acting। हमको लोड कहाँ एक्ट हो रहा है, कितना इसमें पर एक्ट हो रहा है, क्या इंटेंसिटी है,
along the span कैसा है, across the span कैसा है, contact length कितना है, कितना एरिया में डिस्पर्शन होगा, what is that patch area, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा. So here we are locating this position where there is no load acting. Because center to center distance is 3.2, इसमें तो मैंने इतना माइनस किया, यहाँ से इतना माइनस कर दिया, so I will get the remaining distance. That's all. कुछ भी नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है, डिस्टेंसेस है, nothing else. चलिए, what is that distance? Please give me the distance. The distance or the part which is not at all subjected to any load because of impulse, because of the vehicle. How much that distance is? सेंटर टू सेंटर में से मैंने ये माइनस किया है और ये माइनस किया है. चलिए दीजिए मुझे डिस्टेंस ये. प्लीज आंसर. हाँ, why am not able to get any answer from your side? हमको ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन बहुत लेंदी है, बहुत डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वर्क है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज सिंपल. करते तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हुए सॉल्व करते हैं. दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम. ठीक है, प्लीज आंसर. उसके बाद एक ही लोड रह गया है, वो समझ में आ गया तो हमको समझ में आ जाएगी कि अलाउंग क्या है. फिर हमको अक्रॉस के लिए सॉल्व करना है कि यहाँ पर कितना पैच एरिया रहेगा. प्लीज रिप्लाई. नोमान, आमिर एंड जानवी. और वो किधर है? कभी बीच में एक दिन साकिब आता है, एक दिन शायद यूसुफ आंसर करता है, एक दिन कोई और आंसर करता है. 8.75 कैसे आएगा सादिक? 1.72. 1.72. ओके, चलिए दो लोग ने दिया है तो आई एग्री हो सकता है ये आंसर करेक्ट रहेगा. 1.72. देयर इज नो लोड. नाउ फॉर दिस, in case of 68 millimeter load, in case of this 68 millimeter load, axle load, what is the direction of being in contact with the surface in the direction of motion? The direction of motion is 200. So this is 200. यहाँ ऐसे डिस्कशन हो रहा है. तो कितना रहेगा ये? How much on this side it will be? 200 का हाफ. मैं सेंटर से काउंट कर रहा हूँ कि कितना है. आई जस्ट वांट टू सी कि इसके बाहर कितनी जा रहा है. प्लस 0.64 है ना. तो 0.64 कैसे आया पता है? 200 का हाफ हो जाएगा 0.1, फिर भी 0.74. ठीक है, चलेगा. यहाँ से 0.7 है तो यहाँ से भी 0.74, क्योंकि इसका मतलब मैं जस्ट ये चेक कर रहा था कि इसके बाहर तो नहीं जा रहा है. दिस इज 0.74 एंड दिस इज 0.95. दिस इज 0.957. इसका मतलब ये बाहर नहीं जा रहा है. 0.74 वन साइड है, 0.74 अदर साइड भी है. 8 और 7 भी 14. सो दिस इज इक्वल टू 1.48 मीटर्स. ये तो बहुत दूर है. 4.3. ये दोनों कोई मर्ज होने वाला नहीं है. दिस इज इट. सो हाउ मच दिस पार्ट इज व्हिच इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लोड. कितना रहेगा? ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया? दिस 200 plus 0.64 plus 0.64. So that comes to this. ये कितना बड़ा लोड का इफेक्ट नहीं है? 0.957 माइनस 0.74. So this is 712.217. यहाँ पर कोई लोड का इफेक्ट नहीं है. And what is this distance which is not subjected to any load? What is that distance which is not subjected to any load? How will you determine this? यहाँ से यहाँ तक center to center is 4.3 माइनस ये सेंटर से इतना माइनस कीजिए. How much that will be?
सेंटर मीन्स कितना रहेगा 250 था, इट इज हाफ ऑफ 0.25 प्लस यहां से यहां तक कितना है 0.64, इधर का कितना रहेगा 200 का हाफ प्लस 0.64, इट इज 4.3 माइनस 1.28 माइनस ये दोनों हाफ करेंगे कितना 0.45/2, that is minus 0.225, कितना भी दोनों कितना आएगा 0.5 8 2 2 6 5 और 10 का 0 कैरी 1 2 4 5 1 minus 4.3 5 9 12 minus 7 2.795. So this is 2.795. Is that right? The span of bridge. Okay, fine. Thank you. मैं ये डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा स्केच कर देता हूँ. There is no load here for 0.028 meters. Then there is a load for a span of 1.43 meter. फिर 1.7 तक कोई लोड नहीं है. फिर 1 के बाद 2.73 मीटर के लिए लोड है. फिर उसके बाद 2.795 मीटर तक कोई लोड नहीं है. Then there is load here. And this is the end of the bridge. This span only the load is 1.48 and then there is no load for 0.217 meters. Finish. So now we have got the idea about load कहाँ act हो रहा है. ब्रिज पर ऐसे लोड act होने वाला है. लोड ऐसे मूव होगा. लोकेशन ऑफ द व्हील्स अलोंग, लोकेशन ऑफ द व्हीकल्स अक्रॉस, लोकेशन ऑफ द व्हीकल इन द प्लान. हमने तीनों भी स्केच किया है. फिर देखा है कि डिस्पर्शन इफेक्ट कितना लेंथ पर होगा. तो वी हैव गॉट दिस डिस्पर्शन डायमेंशंस. ओके, ठीक है, वी हैव गॉट ऑल दीस डायमेंशंस. ठीक है, फाइन. अब हम देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं. This is first 27 kilonewton, right? Say for 27 kilonewton axial load. पहले मैं इसकी बात करता हूँ. ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो तो मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट यहाँ से यहाँ तक है इन द डायरेक्शन. लेकिन अक्रॉस में कहाँ तक जा रहा है that we will see. व्हीकल्स का पोजीशन ऐसे है. For this concentrated load मुझे देखना पड़ेगा इधर कितना बी इफेक्टिव है और इधर कितना बी इफेक्टिव है. For this 27 kilonewton axial load, this wheel I am talking about, ये है वो wheel near to the edge, close to the support, right? For this wheel, फिर सेकंड व्हील ये है, फिर दूसरे व्हीकल का पहला है, दूसरे व्हीकल का दूसरा है, ऐसे. नाउ सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इफेक्टिव. उसका डिस्पर्शन कहां तक जाएगा. डिस्पर्शन कहां तक जाएगा. अल्फा ए ब्रैकेट 1 माइनस ए डिवाइड बाय एल नॉट प्लस b1. इज इट राइट. फॉर दिस व्हील आई एम टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज अल्फा. It is a factor that depends on B by L naught. What is B? The overall width of this bridge on which the dispersion of the load is possible. So this is 1 plus all this plus 1.5. 1.53 plus the carriage width was 7.8. So it is 10.8 meter. Is that right? B is 10.8.
and this is 10.4 meter. So get the value of B by L naught. अगर मुझे B by L naught पता है, then I can get the value of alpha. कितना है B by L naught बोलिए? How much is B by L naught? एक से थोड़ा ज्यादा रहेगा. B by L naught 1.038, 1.04. अगर 1.038 है तो जल्दी we cannot say that 1.03. अगर हमको अप्रोक्सीमेशन भी करना है तो हायर साइड 1.034 करेंगे, 1.04 लिखेंगे जैसे नोमान लिखा है, क्योंकि वो 3 के आगे 8 लिखा है. 8 को अप्रोक्सीमेट करना है तो एनी डिजिट व्हिच इज ग्रेटर देन 5 or equal to 5, that is to be approximated on the higher side. So that is 1.038 or 1.0. तो क्या लिखो 1.04 लिख दो. Okay. So what is value of alpha? So where will you get? It is on page number 279 of IRC 112. Page number 279. B by L naught, different values of alpha for simply supported slab or linear slab. So ours is a simply supported slab. It is 1.04. So the value is available for 1, the value is available for 1.1, and we have to interpret. What about for 1? It is 2.48. What about for 1.1? It is 2.6. So we have to interpolate with 1.04. Is that right? उससे बोला तो 12 का डिफरेंस है, तो 12 डिवाइडेड बाय कितना है ये 10 1.2 multiplied by 4 1.48. Is it 2.528? Okay, fine. So it is 2.528. So the value of alpha is 2.528. Okay. ये value of alpha आपको हर जगह लगेगा, क्योंकि हर जगह B by L naught is constant only. So I will write that as 2.528. This is very important. Okay. Now after getting alpha, get these bits up to which the effect of this load is 2.528 into A. What is A? A is the position of that concentrated load under consideration from the nearer support. So this is one support. Here is the another support. So this is the nearer support. This is the nearer support. So how much that distance is? 0.743. 0.743 from the nearer support. So A is 0.743. In bracket 1 minus A, 0.743 divided by L naught, 10.4. Plus B1. What is B1? B1 is perpendicular to the direction. देखो पहले का जो हमारा ट्रैक नहीं कर रहा था ट्रैक, तो हम बोलते थे कि फ्रॉम द बेसिक कोड होंगे दिस इज द डिस्पर्शन. ये 0.85 रहेगा अगर ये AA है, और दिस विल बी 0.84 अगर ये 70 R है. ये डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ द ट्रैक विच इज इन कांटेक्ट, और वो हम डिस्पर्शन यहाँ से कंसीडर करते थे फ्रॉम द वेरी कोड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. यहाँ पर तो ट्रैक नहीं है, दिस इज द व्हील. अभी ये व्हील का व्हील कितना कांटेक्ट में है? नाउ दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस.
कितना था ये डायमेंशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मिड, कितना था ये 200, ये 380, हाँ यहाँ पर 500 था for 140 and this was 380. So this dimension which is right perpendicular to the direction of motion in the direction of wind, it is 200. So this is 200. तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये है wind, this is 200. From the very port the dispersion is to be considered. At 40 degree, 45 degree, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा. तो 180 ऐड हो जाएगा. 200 plus 90 multiplied by 2, that 200 plus 180, and the total will be equal to 380. So this D1 is 0.38. So please tell me the effective weight up to which the dispersion effect of this one concentrated group will be. कहाँ तक जाएगा इसका dispersion? हाँ. What is the value of B effective? What is the value of effective width up to which the dispersion effect of this load will be? Alpha A1 minus A divided by L naught plus B1. कितना रहेगा? कुछ भी नहीं, you have to play with the distances. It is simple geometry. Distances identify करना है कि कहाँ तक इफेक्ट होगा लूप का. Please answer. अल्फा A1 minus A divided by L naught plus B1. हमको पता है आपने कहाँ से लिया है ये. All this is available in IRC 112. Page number 279. Please answer. चलिए मैं आज मतलब ये लोड कैलकुलेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ. So that when we meet in the next class, we will do the design part. At least मुझे ये analysis part complete करने दीजिए today. I want to complete this analysis part. So that in the next class we will start the design. चलिए please answer me. Is it that difficult to calculate alpha A1 minus A divided by L naught plus B1? That is the effective width up to which the effect of this load will be 0.663. So it is equal to 0.663. Is it right? Is it correct? 2.124. ये क्या आ गया है 2.124 में? Which of the two is right? 7 दूनी 14. 14 से थोड़ा सा कम रहेगा. 2.5. 25 से 1.75. तो ये और थोड़ा सा कम हो जाएगा. फिर 0.38. 1 point something रहना चाहिए मुझे लगता है. 2.5 multiplied by 0.7. 25 अट्ठे 200, तो ये 2 हो गया है. फिर उसके बाद हम फर्दर थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो 2 से कम हो गया. अच्छा प्लस 0.38 हो गया. हो सकता है 2 से बड़ा रहेगा. यू आर राइट. सो इट इज 2.124. ओके फाइन. थैंक यू. Maybe you are right. 2.124 meters. अभी देखिए, how much it will be on one side? 1.068. Is it right? On one side, because this is divided by 2. So on one side, जिसका डिस्पर्शन एक साइड में 1.068 मीटर जाएगा. सेंटर से कितना डिस्टेंस है यहाँ पर अवेलेबल 1.9 और ये 1.06. इसका मतलब डिस्पर्शन फुटपाथ के अंदर ही यहाँ कहीं पर खत्म हो जा रहा है. It is not going outside of the footpath. It is getting here only. 1.06 इसका मतलब ये सेंटर तक नहीं जाने वाला है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर इज 1.8, इज 1.06. ये डिस्पर्शन यहीं कहीं हो जाएगा. लेकिन 1.06 इधर को और 1.06 इधर से भी जब आएगा,
अगर हम उसको ऐड करते हैं तो that will be something more than 2 point from the center. From the center it is 1.06 और इधर से भी 1.06, so that will be 2.124 और ये डिस्टेंस तो 1.4 ही है, इसका मतलब इसके सेंटर के आगे तक जाएगा, राइट? ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, so that effect is getting merged. ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, is it okay? इसके सेंटर तक नहीं आएगा क्योंकि दोनों की ये डिस्टेंस है, ये 1.8, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया है, बट अगर ये टोटल डिस्टेंस मैं देखता हूँ इट इज गेटिंग मर्ज हियर, क्योंकि अगर ये मर्ज नहीं होता, सपोज अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये ऐसे है, ये डिस्पर्शन ऐसे हो रहा है, ये डिस्पर्शन ऐसे हो रहा है, सेंटर से साइड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1.068, सेंटर से दूसरा साइड का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1.068, और अगर टोटल में डिस्टेंस अगर ऐड करता हूं तो ये दिस डिस्टेंस विल बी, if the effect is not getting merged, if the effect is just touching 2.124, अगर ये दो व्हील के बीच का डिस्टेंस 2.124 मीटर रहता तो लोड का इफेक्ट जस्ट टचिंग रहता, बट एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील इज 1.8 मीटर ओनली, इसका 2.124 में ये इफेक्ट मर्ज होने वाला है, बिकॉज़ दिस इज जस्ट 1.8, so this effect is getting merged. ये तो 1.7 उससे भी कम है, तो यहाँ पर भी इफेक्ट विल बी गेटिंग मर्ज. This is 1.8, the effect is getting. This is 1.2, 1.068. इसका मतलब फुटपाथ के अंदर भी नहीं जाएगा, यहीं पर कहीं खत्म हो जाएगा. यहाँ से है ये डिस्टेंस 1.068 मीटर्स. यहाँ से है ये डिस्टेंस 1.068 मीटर्स. और ये डिस्टेंस आपको पता है कितना रहना चाहिए. So here I will get the effective width on which the effect of this load will be, net effective width. How much is the B effective net? That will be equal to 1.068 plus this 1.8 plus this 1.7 plus this 1.8 plus 1.068. This is the net effective weight on which the dispersion effect of this load will be. 18, 18, 36, 18, 54, उसमें से एक गया 53, so it is 5.3 plus 2.136. गलत किया क्या हमने कुछ? ये 1.068 नहीं आता है क्या? कितना था वो? 2.124, तो कितना होना चाहिए था? ये 2.062 होना चाहिए था. 2.062, 2.062. So it will be 1.062. It will be 1.062. वो मर्ज होने वाला है, तो कितना हो जाएगा फिर भी ये 2.124. 0.04247. So this is 7.424 meter on which the effect of this load will be. So here I have got the dimension where the effect of this load will be. यहाँ है, यहाँ फुटपाथ में नहीं जा रहा है. This is the area on which the effect of this load is. ये लोड इस एरिया पर इफेक्ट करने वाला है. Is it right? How much? This is 7.424 meter, and this is the direction of load is 1.43 meter. So this is the patch or the influence area on this part of the bridge. The effect of this load will be. Right, the remaining part of the question we will do in the next class. क्या होने वाला है? Total load divided by this area, I will get the intensity of load. फिर उसको हमको impact factor से multiply करना पड़ेगा. Then I will get this intensity here. कि यहाँ का intensity कितना आया है. फिर ये load का मुझे influence area calculate करना पड़ेगा कि कहाँ तक distribute हो रहा है. Then that total load divided by that area. फिर ये load के लिए. So I will get this intensity as of load. Then I will sketch the bending moment diagram.
and I will get the maximum bending moment. So the remaining part of the question, और फिर अभी हमको shear force के लिए भी करना पड़ेगा. This is the vehicle position only for the bending moment. Shear force के लिए I have to pass the vehicle again, and I have to keep the vehicle such that it must produce the maximum shear. तो कैसे रहेगा? Maximum of the load, the greatest of the load must be close to the support, and maximum of the load must be active on the span. That will give us the maximum shear force. Okay, fine. So the remaining part of the question we will do in next class. Okay, I am concluding lecture here. Thank you. क्या लिखा नहीं है? क्या वाला लिखा नहीं है?